Good evening, students. Am I audible? Good evening. Good evening, sir. Yeah. Uh, Last lecture we had studied about the what is mean by supply, valuation of supply, then valuation of supply of goods, supply of services that we had seen. Then also we had seen nothing. It is the zero rated supply means what? In case of export of goods and services, at that time how much tax we need to pay, and in case of import of goods and services, that time what will be the process, that I think we had seen in the last lecture. Then we had seen the which are the goods and services which are zero rated. So all agricultural goods are zero rated supply. Zero rated supply means what? The supplier has not pay the supplier has not pay uh, to GST on this kind of goods and supply. So all goods, all agricultural products are tax free. Getting this? Then we had seen in the last lecture documents required to get the refund of the export. तो export के बारे में हम लोगों ने देखा था कि जितना भी मेरा export रहेगा, that all export are considered as a zero rated. Means what? There is no need to pay GST on the supply. Getting this? But provided that what you have to do, you have to take or you have to prepare, you have to submit this letter of undertaking or bond, and you will get the returns whatever amount you are paying. Getting this? So that you will get in the form of GST refund 11, that you have to submit this form on the GST portal. Getting this? That we had seen in the last lecture. Then we had also seen about the zero rated supply. Zero rated supply means what? On which the whoever is there, the person who is receiving the goods and services, from him the in GST will not be collected. That is something about zero rated supply. So that special economic zone or export agar rahega, to in that case rate of tax will be zero. Then I think this also we had seen in the last lecture, the input tax credit ka claim on the basis of zero rated supply kaise lete hai, that also we had seen. Then list of zero rated supply that we had seen. Now how exporters can claim for refund for zero rated supply. अगर zero rated supply के ऊपर अगर exporter को claim करना है, refund लेना है, तो that time there are two process. So an exporter dealing in the zero rated goods and services, GST can claim a refund for zero rated supply as per the following options. Means what? We have two options. Option number one under section 16(3)(a), and option second is the under section 16(3)(b). एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to submit the letter of undertaking, or I have to submit the bond. Getting this? That is form number, that is GST refund form 11. So by submitting this form, if you submit this form, then and then you will get the refund of input tax credit. ITC stands for input tax credit. Okay. So before starting of your exporting activity, first you have to fill or you have to submit letter of undertaking or bond to the GST portal. Getting this? In which it is mentioned that if you are today you are making the invoice of that goods, that goods should be transferred within 3 months. अगर वो नहीं होता है तो आपको रिफंड का क्लेम नहीं मिलेगा. Getting this? Second check क्या है? Once you have prepared the sign, once you have prepared the invoice, from that day within 1 year you should get the foreign convertible currencies of that supply within 1 year. Okay, if you get it, then and then you will get the refund. अगर वो एक साल में 3 महीने में अगर सप्लाई एक्सपोर्ट नहीं होता है और 1 साल में मुझे पैसे वापस नहीं आते हैं, तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा. दूसरा ऑप्शन क्या है? If you have not submitted this undertaking or bond, at that time first you have to pay IGST on these exports. If you are not
श्योर अबाउट योर एक्सपोर्ट्स, क्योंकि मेरे जो कस्टमर है आउटसाइड कंट्री के वो फिक्स नहीं है। दैट टाइम आई शुड नॉट डू दिस बॉन्ड और अंडरटेकिंग, मुझे पता ही नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैड नॉट डन। लेकिन अभी सम ऑफ द टाइम्स इट मे हैपन दैट यू विल गेट इमीडिएट ऑर्डर फ्रॉम द एक्सपोर्ट, तो इन दैट केस व्हाट विल द प्रोसेस, इन दैट केस सिंपली at the time of making the supply of export you have to pay IGST, you have to pay IGST and then you can refund for IGST, जितना भी IGST आप पेमेंट करोगे उतना आपको रिफंड मिल जाएगा once this process has been completed. Okay, so there are two options, एक तो बॉन्ड सबमिट करो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट करो। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड बॉन्ड में क्या है, बैंक विल टेक द विल टेक गारंटी ऑफ योर IGST और दैट GST। ओके, तो वो बॉन्ड सबमिट किया तो आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो सीधा आप IGST अभी पेमेंट करो, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट exporter, this is something about claim for refund on zero rated supply. Okay, for example, how exporter can claim refund for under option number 1, that is the letter of undertaking method. उसमें क्या होता है देखिए, ABC company is laid there in Chennai and this ABC company is transferring or the supplying goods to the PQR company which is having in Delhi. एबीसी से एबीसी चेन्नई से मटेरियल कहाँ पे जा रहा है, पीक्यूआर दिल्ली पे जा रहा है। गेटिंग दिस? सो चेन्नई टू दिल्ली मींस व्हाट, वन इज द स्टेट, अनदर इज व्हाट, union territory is there, that's why simply you have to pay IGST. Getting this? So IGST will be paid by the consumer which is in the Delhi. Getting this? अभी दिल्ली का कंज्यूमर क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करेगा और दिल्ली से मटेरियल जर्मनी जा रहा है। सो द पर्सन हु इज द मैन्युफैक्चरर, द सप्लायर, द कस्टमर हु इज फ्रॉम दिल्ली, he will make certain process on the goods and raw material and he will send this material towards the Germany, means what, he is making export. Okay, अभी in that case, अभी see here, input credit किसको मिलेगा, input credit किसको मिलेगा, see here. So supplier from ABC Chennai, he is sending the raw material or goods to PQR of ₹100. Getting this? Now see in the notes. So PQR company should ensure no GST is charged in the euro invoices. PQR company क्या करेगा? So that PQR company limited, it will check that the IGST will not be charged on the invoices which are prepared while sending the material to the Germany. So PQR limited क्या करेगा देखिए, PQR limited will bring proof of export. What they will do, they will have to submit the invoices and which are going across the country. So they have to submit the proof of export, that is the invoice of exports along with shipment bills. Getting this? At that time there is no need to pay IGST. Getting this? Second, PQR can claim for the refund of income tax credit. तो PQR अगर एक्सपोर्ट के बिल्स जो कनेक्ट करता है, शिपिंग बिल कनेक्ट करता है, एट दैट टाइम PQR हैज नॉट टू पे, दिल्ली बेस्ड कंपनी हैज नॉट टू पे द GST. तो इनकम दिल्ली बेस्ड कंपनी को GST पेमेंट करने की जरूरी नहीं है, लेकिन उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ही कैन, दैट कंपनी कैन गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हिच इज पेड टुवर्ड्स द चेन्नई. जो दिल्ली में माल लाते समय जो कुछ उसने क्या किया रहेगा, इनपुट टैक्स, जो टैक्स पेमेंट किया रहेगा. गेटिंग दिस? सो दैट टैक्स पेमेंट IGST जो उतना भी भरा रहेगा, उसी IGST के ऊपर उसको क्रेडिट मिलेगा, उसको क्रेडिट मिलेगा. कितना क्रेडिट मिलेगा, कितना भरा है, 100 रुपीज का के ऊपर जितना भी टैक्स गया रहेगा, जितना भी करेगा उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. एंड दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ refund. So this is the process. Means what, though you are exporting goods and services into outside country, at that time you have to pay IGST. और जितना भी आप IGST पे करोगे उतना क्रेडिट आपको इनपुट क्रेडिट IGST में से इधर मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, IGST जितना हम लोग पे करोगे गवर्नमेंट को,
उसमें से जितना एबीसी कंपनी से जो मटेरियल लेते समय जितना भी मैंने टैक्स पेमेंट किया रहेगा, आईजीएसटी टू आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. Try to understand. So here, when we are going to change the state, at that time I have to pay IGST. When we are going to exchange goods and services to the outside country, at that time, being an export of goods, there is no need to pay export duty, but provided that you can get the credit of IGST. Okay, now next is, अभी ये हुआ एक्सपोर्ट के बारे में. तो इंपोर्ट के बारे में क्या है, देखिए जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक्सपोर्ट हमारे लिए टैक्स फ्री है, एक्सपोर्ट हमारे लिए टैक्स फ्री है, लेकिन इंपोर्ट इज नॉट टैक्स फ्री. अगर हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड कंट्री में सेल आउट करते हैं, भेजते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सपोर्ट, एंड ऑन दिस एक्सपोर्ट there is no need to pay any kind of tax, but it is not applicable in case of imports. Imports यानी as a Indian we are importing goods and services from other country. एक्सपोर्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग हमारे माल दूसरे कंट्री में बेचते थे. इंपोर्ट में दूसरे कंट्री से, चाइना से माल इंडिया आ रहा है, जर्मनी से कार्स इंडिया आ रही है, गेटिंग दिस, इंग्लैंड से कुछ माल इंडिया आ रहा है. मीन्स व्हाट, whenever you are importing goods and services towards the India, at that time you have to pay IGST, because importing from other country will be treated as importing from other states. Again I am repeating, importing from other country will be considered as importing from other state. So whenever there is the transaction between two states, at that time you have to pay IGST. In the same way, here also you have to pay you have to pay IGST with your custom duties. Getting this? तो यहाँ पे देखिए, the import of goods and services will be treated as deemed interstate supply. Interstate supply consider किया जाएगा, माना जाएगा, and it would be subject to pay the integrated tax, that is IGST, in addition to applicable custom duty. यानी custom duty तो मुझे भरना ही भरना है. With this custom duty, whatever is the rate of custom duty that I have to pay, along with custom duty I have to pay or tax, GST also I have to pay. Means what, import of goods and services is not tax free. The rate of tax will be custom duty plus GST. So this should be higher. Getting this? So whenever we will purchasing goods and services from other countries, at that time we have to pay 2-3 taxes. एक तो मेरा custom duty रहेगा, उसके बाद और कुछ surcharges रहेंगे, सेस रहेंगे, वो भी मुझे पेमेंट करना है, and in addition to this I have to pay GST as well. Okay, अभी levy of GST कैसे होता है, देखिए IGST on import of services would be levied under GST Act. ये GST Act में प्रोविजन किया है कि कुछ भी हम लोग माल इंपोर्ट करेंगे, at that time IGST need to be paid. IGST किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी IGST जाएगा, उसमें से आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रहेगा, बचा हुआ हिस्सा उसी रिस्पेक्टिव स्टेट को वापस दे देगा. The levy of IGST on import of goods would be levied under the Custom Act 1962 and Custom Tariff Act 1975. Okay, तो उसमें IGST पेमेंट करते समय एज पर कस्टम एक्ट, कस्टम यानी क्या बोलते हैं उसको, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं. कस्टम ड्यूटी यानी इट इज नथिंग बट इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी. So this is the, as per which import duty or custom duty will be charged on the basis of Custom Tariff Act 1975 and Custom Act 1965. If my goods are coming under this category of these particular goods and services, at that time I need to pay custom duty as well as IGST. Okay, now who is liable to pay? अभी ये इंपोर्ट ड्यूटी कौन पेमेंट करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ रिसीवर ऑफ द सर्विसेज, रिसीवर ऑफ गुड्स, आई एम स्टेइंग इन इंडिया, दैट आई एम द पर्सन हु इज इंपोर्टिंग ऑफ सर्विसेज.
और द पर्सन हु इज इंपोर्टिंग द गुड्स, जो आदमी माल मांग इंपोर्ट कर रहा है, जो आदमी माल रिसीव कर रहा है, उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। कौन से? इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज कस्टम ड्यूटी एज वेल एज जीएसटी। बट इन केस ऑफ सर्विसेज क्या होता है, देखिए, नाउ एज अ इंडियन वी कैन अवेल द सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम यूके से कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स लेते हैं। एट दैट टाइम व्हाट इज द थिंग, but in respect of import of online information and database access और retrieval services, अगर हम लोग दूसरे कंट्री से सर्विसेज लेते हैं by unregistered non taxable recipient, अगर वो रजिस्टर्ड एंड टैक्सेबल रेसिपेंट रहा तो उसको पेमेंट करना है। दैट इज दिस, अगर हमारे कंपनी, मेरा बिजनेस रजिस्टर है इंडिया में, एंड इफ आई एम इंपोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड कंट्री, एट दैट टाइम आई हैव टू पे द टैक्स, आई हैव टू पे, दैट इज कस्टम ड्यूटी along with your IGST. But what is the second thing? If the services are rendered or services are imported by unregistered and non-taxable recipient, तो तब जीएसटी कौन पे करेगा? At that time, the supplier located outside India, जो कंपनी मुझे फॉरेन से माल भेज रही है, that company is responsible for payment of taxes. Try to understand. अगर जो आदमी माल मांग रहा है फॉरेन कंट्री से, उसका अगर रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उसको क्या करना है? टैक्स पेमेंट करना है। अगर जो आदमी मांग रहा है अदर कंट्री से, उसका अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो इन दैट केस जो कंपनी फॉरेन से माल भेज रही है उसको जीएसटी और उसको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इन इंडिया द पर्सन हु इज रिसीविंग सर्विसेज ही हैज नॉट रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर रहा तो उसको पेमेंट करना है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं रहा तो फॉरेन कंपनी हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस IGST। फॉर दिस पर्पस अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो इधर सप्लायर विल हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन, तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सप्लायर कौन है? फॉरेन कंपनी, उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया टू पेमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एक तो उसको खुद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इंडिया में, या दूसरा आदमी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सो दिस इज द हु इज लायबल टू पे द टैक्स। कौन लायबल है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन अगर इंडिया का रहेगा, अगर रेसिपेंट रहेगा तो उसको टैक्स पेमेंट करना है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहेगा, अगर नॉन टैक्सेबल रेसिपेंट नहीं रहेगा, नॉन टैक्सेबल रेसिपेंट रहेगा, तो एट दैट टाइम फॉरेन कंपनी who is providing these services has to pay the integrated tax. So as well as that company has to appoint this person to make the payment. So this is something about who is liable to pay the tax. So this is the tax liability in case of import of goods and services. Clear everybody? Now, so whenever you will go to purchase the value, whenever you will go to purchase the tax, at that time first you should know the actual value. You should know the actual value. That actual value, the actual value on which this GST will be paid, that value is called as a assessable value. Try to understand. The actual value is the value, sorry, the assessable value is the value on which you have to pay the GST. जो वैसी वैल्यू है किसके ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन किया जाएगा, उसी वैल्यू को बोलते हैं assessable value. The goods which are imported into India shall be, in addition to basic custom duty, be liable to integrated tax at such a rate as leviable under the IGST Act and similar article on its supply in the India. तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? I have to find out the assessable value.
Okay, accessible value means what? See, you are importing goods and services from other countries. Getting this? So when we are importing goods and services from other country, at that time currency will be different ना. दोनों देश का currency different है. दोनों countries का currency different रहेगी. Currency rate difference रहेगा. That's why you should have to find out its value with your own currency. जो माल हम लोग डॉलर्स में हम लोग मांग रहे हैं, तो उसका इंडिया का करेंसी में उसके वैल्यूएशन कितना है, दैट आई हैव टू कैलकुलेट, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज असेसेबल वैल्यू. सपोज आई एम परचेसिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम UK or software from US. Okay, and for this US company is charging me $2. So $2 means how many rupees, that I have to convert, and that conversion is called as a accessible value. So $2 means what? For example, 120 rupees. Let us say, अगर one US dollar is equal to 60 Indian rupees. तो $2 अगर मुझे उसको देना है, तो उसका इंडियन करेंसी में कितना हो गया? 120 rupees. That is something about accessible value. Getting this? The value of goods for purpose of levying the integrated tax shall be accessible value plus, तो accessible value में क्या ऐड हो जाएगा? Custom duties levies. तो accessible value में और किसका एडिशन है? That is the custom duty, import duty. So there is the difference between import duty and GST. IGST तो मुझे भरना ही है, लेकिन along with this IGST, I have to pay the import duty. Import duty is nothing but your custom duty under Custom Act. Now, in addition, along with this custom duty payment करना है, accessible value मुझे निकालना है. In addition to this, again, some of the times I need to pay GST compensation cess. Cess यानी surcharge. Surcharge यानी tax on tax. जितना tax हम लोग पे करेंगे, उसके ऊपर और एक बार 0.2%, 0.4% extra tax payment करना पड़ता है. That is something about cess. अगर ये भी आ गया, so this cess will be applicable in case of certain luxurious goods. तो luxurious goods and services के ऊपर कभी-कभी it depends upon the category of luxury goods which you are importing. तो मुझे accessible value find out करना है, custom duty का rate find out करना है, custom duty का amount find out करना है, then I have to find out the IGST, कितना tax लगेगा, and along with this I need to know the GST compensation cess as well. इसका GST compensation cess will be also one form of tax which will be paid on the tax on tax. कितना टैक्स है, कितना टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं उसका और 0.2%, यानी अगर if I am paying 200 rupees as a tax, total tax, तो उसका अगर 0.2%, यानी once again there will be again 20 पैसे मुझे टैक्स एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा. That is something about cess, यानी एक्स्ट्रा चार्जेस. So in this way, we can calculate the accessible value of import without finding out accessible value of import. I can't pay the IGST. Okay. Now, here is one example that I have taken for your understanding. Just go through this example, try to understand, and then we will explain. Then we will discuss about this. Just go through this example fast.
Okay. Now see here. So this is the case. Assessable value of article imported to India is 100 rupees. अगर 100 rupees का माल अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर लेट्स से we have to pay basic custom duty of 10%. Okay, so this is the rate of custom duty which is fixed. And next, on the basis of this custom duty and assessable value, I need to pay 18% integrated tax. So at that time, how much amount of total tax I need to pay? So first we need to understand the assessable value. This is the convertible into our Indian currencies, that is rupees 100. Then on the basis of this assessable value, I need to pay tax. तो अगर assessable value के ऊपर custom duty अगर 10% भरना है तो इसका मतलब 10% of 100 is equal to rupees 10 आया. तो पर्पस तो इंटीग्रेटेड टैक्स पेमेंट करते समय पहले मुझे असेसेबल वैल्यू में बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करनी चाहिए. अभी इंटीग्रेटेड टैक्स किसके ऊपर लगेगा? दैट इज असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी. तो अमाउंट कितनी होगी? 110 रुपीज. So integrated tax will be charged on 110 rupees because basic custom duty will be added first into the assessable value and then the valuation will be considered. And on that final valuation, 18% I have to pay the GST, means that the 18% is not of 100 rupees. 18% of 100 plus 10 is equal to 110 rupees के ऊपर 18% मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So how much this value? So IGST मुझे कितना पेमेंट करना है? That is 19.80 पैसे, rupees 19.80 पैसे. This will be a rate of, this is the amount of IGST which I have to pay. So as an importer, how much total tax I have paid? एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी में मेरा 10 रुपया गया और IGST में मेरा 19.80 रुपीज गया. एज ए इंपोर्टर मेरा टोटल टैक्स कितना गया? 29.80 rupees. Means what? Here at the time of importing of goods and services, I have to pay two taxes. One tax is called as a basic custom duty and another is the integrated tax. So total tax liability on my head is 29.80 rupees. Getting this? Now, अभी क्या होता है? There will be the certain goods and services on which extra cess will be also levied. कुछ ऐसे कुछ goods and services रहेंगी कि उसके ऊपर सेस भी लगता है. सेस यानी other form of tax. Cess will be other form of tax. Okay, and where this cess will be applicable? On the basis of your assessable value plus custom duty. इसकी जितने भी वैल्यू रहेगी उसके ऊपर और कुछ एडिशन चार्ज अगर गवर्नमेंट को मुझे देना है तो दैट इज समथिंग अबाउट सेस. तो वो क्या होगा? दिस सेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रुपीज 110, not 100 rupees. Getting this? So this is called as a tax on tax. So this cess will be calculated on the rupees of assessable value plus basic custom duty. So इसका सम किया जाएगा और उसके ऊपर मुझे सेस भरना पड़ेगा. Clear everybody? Tell me fast. Yes, sir. Okay. So this is how import duty is charged. This is how import duty is charged. तो कोई भी importer कोई goods and services अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करता है तो उसको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करनी है एंड अलोंग विद कस्टम ड्यूटी आईजीएसटी भी उसको पेमेंट करना है. कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे रहेंगे कि उसके ऊपर अलोंग विद बेसिक कस्टम ड्यूटी यू हैव टू पे सेस एज वेल एंड दिस सेस विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी. ओके, और ये सेस की वैल्यू ऐड करने के बाद फिर हम लोग जीएसटी 18% लगाएंगे. Getting this? So this is the process of importing goods and services and payment of custom duty and IGST. Now just look towards the diagram. The goods का import
गुड्स का इंपोर्ट ड्यूटी कैसे पेमेंट करते हैं और सर्विसेज का इंपोर्ट ड्यूटी के लिए क्या प्रोसेस है. जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड. इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. देयर इज द सेक्शन 210 for IGST Act, which is it is mentioned under section 210 of IGST Act 2017. It is respect to goods, and section 211 of IGST Act 2017, it is for services. So as per this provision, import duty will be charged in the form of IGST, bringing goods into the India from a place to place of outside India. एंड यहाँ पे सर्विसेज के बारे में देखिए. सप्लायर शुड बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट विल बी लोकेटेड इनसाइड इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज विल बी इंडिया होना चाहिए. दैट टाइम द सर्विसेज, द IGST विल बी टैक्स्ड. अभी देखिए लेवी ऑफ टैक्स कितना होता है गुड्स के लिए. दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, दैट BCD यानी क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST as well as some of the cess I have to pay. So this is something, this is the total levy of tax. Okay. अभी levy of tax in case of services क्या है, registered recipient on reverse charge. So levy of tax is for unregistered person payable by the supplier who appoint the person. अगर services के बारे में क्या है, रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट रहेगा तो वो टैक्स पेमेंट करेगा. अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहेगा तो जिस कंपनी से सर्विसेज, जिस कंट्री से मुझे सर्विसेज मिल रहे हैं, उसी कंट्री का आदमी यहाँ पे पर्सन अपॉइंटमेंट करेगा और वो टैक्स पेमेंट करेगा. मींस व्हाट, फॉर द टाइम बीइंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट टैक्स फ्री. Export of goods and services will be exempted. So import of goods and services will be considered as a interstate supply, and there is liability to pay IGST along with BCD, that is basic custom duty and taxes. अभी देखिए इंपोर्ट और अगर कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट हम लोगों को कैसे लेते हैं. कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट, सपोज दैट if you are importing goods and services, at that time there will be the custom clearance. जितने भी हम लोग custom clearance charge करेंगे, so that custom clearance will be adjusted with basic custom duty and IGST. So I have to pay this BCD and IGST. So once we are purchasing this, eligible for only IGST, not eligible, यानी input tax credit किसका मुझे मिलेगा, IGST का मिलेगा, BCD का नहीं मिलेगा. Getting this? So wherever we are going to import goods and services, at that time we are paying two taxes. One is BCD, यानी basic custom duty, and second is the IGST. So here you will get only credit of IGST, not basic custom duty. तो basic custom duty का आपको input tax credit नहीं मिलेगा. You will get only credit of IGST from Indian government. Okay. अभी देखिए, so this is the slide which is already explained previously. अभी जो डायग्राम यहाँ पे हम लोगों ने देखा है ना, उसी का ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है. IGST का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा आउटवर्ड सप्लाई के बारे में. ओके तो एक बार आप लोगों ने इनपुट किया, IGST पेमेंट किया, और उसके बाद अगर हम लोग बाद में मेरे सप्लायर को, मेरे होलसेलर को, मेरे रिटेलर को मैं सप्लाई करने के लिए जाऊंगा, एट दैट टाइम यू विल गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट. लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. गेटिंग दिस? अभी ये बेसिक इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज देयर. अगर इंपोर्टिंग गुड्स आर इनटू कौन से कंट्री में, सॉरी कौन से स्टेट में हम लोग कौन सा टैक्स भर रहे हैं, IGST भर रहे हैं. ये IGST कौन से स्टेट को जाएगा आउट विद इन इंडिया, जिस स्टेट में माल एक्चुअली सप्लाई हुआ है, जिस स्टेट में माल एक्चुअली सप्लाई हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मेरा सप्लायर है दिल्ली का, और वो माल किधर मांग रहा है, राजस्थान में माल मांग रहा है.
तो किसको मिलेगा इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट? राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट को आईजीएसटी जाएगा और उसको उसका क्रेडिट भी राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा, नॉट इन दिल्ली, बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहाँ पे सप्लाई, कौन से लोकेशन को माल की डिलीवरी हो रही है, कौन से लोकेशन को सब सर्विसेज का डिलीवरी हो रहा है, उसी स्टेट से उसी इंपोर्टर को आई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। माई इंपोर्टर इज फ्रॉम दिल्ली but he wants to supply goods into Rajasthan. That's why this Rajasthan government will give you ITC. You will adjust your input tax credit which is paid towards the IGST from Rajasthan government. Okay. Now import of services देखिए, just read these slides. Import of services को भी सप्लाई कहा जाएगा। Business test is not required for consideration test. So business test is not required, but consideration test is required to be fulfilled on for import of services to be considered as a supply. तो इसका consideration test होना चाहिए। Consideration means what? With respect to money, its valuation should be there. Business test is not required, but consideration test is required. Okay. And import of services by taxable person from related person or from a distinct person as defined under section 25 of ICGST Act 2017. Okay. In course or furtherance of business shall be treated as supply even if it is made without consideration. तो here अगर consideration यानी क्या? Consideration is nothing but you are going to count in terms of money. ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर आप इंपोर्ट करते हैं, यानी आपको अदर कंट्री से, फॉर एग्जांपल वी हैव वन यूनिट इनटू अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी हैज वन यूनिट इनटू अदर कंट्री एंड उसी कंट्री से माल इसी कंट्री में टाटा मोटर्स के पुणे लोकेशन में आ रहा है। एट दैट टाइम टाटा मोटर इज नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट, तो टाटा उधर से फ्री ऑफ कॉस्ट, टाटा का एक यूनिट जर्मनी में है, जर्मनी से माल पुणे आ रहा है। अगर पुणे आते समय टाटा ने कुछ भी चार्ज नहीं किया उसी गुड्स के ऊपर, एट दैट टाइम टाटा ने चार्ज नहीं किया, इसका मतलब दैट गुड्स हैज नॉट असेसेबल वैल्यू बट इट विल बी नॉट वर्क। तो यहाँ पे असेसेबल वैल्यू मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। दो यू आर नॉट paying certain amount to the Tata, but here you have to pay the tax. Try to understand. Though you are not taking the consideration, though you are not paying the consideration, but still you have to pay the GST. Some of the times you will be supplying goods and services free of cost to your sub unit. It doesn't mean that there is no need to pay the tax. You have to pay IGST. So this is something about import of services. So on any kind of import of services, you need to pay IGST. कोई भी विद फ्री रहेगा या विथ चार्ज रहेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना है। सो जो कुछ हमारा इंपोर्ट रहेगा, तो इंपोर्ट विथ कंसिडरेशन रहेगा या विदाउट कंसिडरेशन रहेगा, यू आर लायबल टू पे टैक्स। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी रेजिम। जीएसटी रेजिम में कौन से सप्लाई को मेंशन किया है? सो अंडर द सेक्शन 7 ऑफ GST Act, that is the Goods and Services Act, it has defined supply by so many varieties or so many categories. One is called as a composite supply, continuous supply, inward supply, outward supply, mixed supply, taxable supply and non-taxable supply. So these are the various classifications or these are the various categories which comes under GST regime. तो ये सब के डेफिनेशन GST Act 2017 में दिया है। Getting this? So how many supplies are there? There are 3 plus 4, 7 types of supply
which are inverted or which are described under GST Act. Try to understand. Supply 7 में composite supply, continuous supply, inward supply, outward, mixed, taxable and non-taxable supply. So these are the various categories of supplies mentioned in GST regime. Then one more definition is composition levy. कंपोजिशन लेवी क्या होते हैं? हम लोगों ने कंपोजिट टैक्स देखा है. कंपोजिट टैक्स इज नथिंग बट कंपोजिशन लेवी. कंपोजिशन टैक्स भी बोलते हैं या कंपोजिशन लेवी भी बोलते हैं. अभी कंपोजिशन लेवी क्या है? जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स. जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड. कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन टैक्स हम लोगों ने इसी चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर के दौरान हम लोगों ने देखा है. I think we have seen this in the second unit. I think now this is third unit going on. We had seen in the second unit. Did you understand or should I explain? Yes, tell me, did you understand or should I explain? So understand. Understand. हाँ, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था. जिसका टर्नओवर बिलो 20 lakhs है, गेटिंग दिस, तो उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सन नहीं है. चाहे तो वॉलंटरली कर सकते हैं. उनको क्वार्टरली, उसको हर महीने में उसका रिटर्न फाइल करने की जरूरी नहीं है. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स ही विल पे ऑन एनुअल टर्नओवर. उसका टर्नओवर, कुछ फिक्स टर्नओवर का स्लैब उसको दिया जाएगा, उसके ऊपर वो फिक्स टैक्स पेमेंट करेगा. उसको बोलते हैं कंपोजिशन लेवी और कंपोजिशन टैक्स. नाउ what is mean by tax exemption? Just read this slide. Exemption और deduction में क्या फर्क है? Then we will discuss. First you go through this slide. Yes, finished. Yes, sir. हाँ, टैक्स एग्जम्पशन यानी क्या है कि आई गॉट राइट टू सेव माई टैक्स. आई हैव राइट. So I am manufacturing certain kinds of goods and services which are already ignored by the tax. टैक्स ने उनको सहूलत दी है. क्या सहूलत है? No need to pay the tax. That is all agricultural products are exempted. Exemption यानी मुझे राइट मिला है. कौन सा राइट? टैक्स नहीं भरने का राइट मिला है. टैक्स
भरना नहीं है उसी प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये मेरा अधिकार है। कि क्या अधिकार है मेरा I should not pay. I got right right not to pay tax. That is called as a tax exemption as per Income Tax Act. ये अधिकार किसने दिया है मुझे? इनकम जीएसटी एक्ट ने दिया है या इनकम टैक्स ने दिया है कि if you are producing certain kinds of goods and services at that time, certain goods and services are tax free. Tax free यानी you got 100% exemption. Means what? There is no need to calculate the tax. There is no need to prepare. There is no need to file the returns and refund. कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा मैन्युफैक्चरिंग करो और सेल आउट करो। कहाँ पे होता है एग्जम्पशन? ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का सप्लाई हम लोग करेंगे तो एग्जम्पशन मिलेगा। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर हम लोग माल रिसीव करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, तभी भी हम लोगों को जीरो रेटर सप्लाई है, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी पेमेंट करने का जरूरी नहीं है। तो ये एग्जम्पशन का अधिकार मुझे किसने दिया है? दैट एग्जम्पशन का अधिकार मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी फेडरल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया रहेगा। दैट इज नथिंग बट एग्जम्पशन, टैक्स एग्जम्पशन। मीन्स व्हाट? द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ दिस टैक्सेबल इनकम विल नॉट बी कैलकुलेटेड। आपका इनकम टैक्सेबल कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा बिकॉज दिस टोटल इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। So whatever many products you are supplying, whatever services you are supplying, these are tax free. That is called as a tax exemption. अभी deduction क्या है देखिए, deduction is nothing but you will not get paid total exemption. आपको 100% फ्री नहीं दिया जाएगा, आपको 100% फ्री नहीं दिया जाएगा, but to certain extent you have to pay some amount. Okay. To certain extent, you have to pay certain amount of tax. That is something about deduction. तो deduction कैसे होता है? First, the total tax liability will be calculated. For example, I am sending goods and services at that time 18% tax on 1000 rupees. कितना आया? 180 rupees tax आ गया 18% से. So first I have calculated the total tax liability on 1000 रुपीज वैल्यू था प्रोडक्ट का, उसके ऊपर 18% टैक्स लग गया तो उसकी वैल्यू होगी 180 रुपीज। तो उसमें से मुझे क्या करना है? I have to pay 180 rupees, but as per the specifications, as per the given rules and regulation, मुझे उसका आधा हिस्सा ही भरना है, यानी आधा हिस्सा मुझे टैक्स डिडक्शन मिलेगा। Getting this? तो मुझे टैक्स डिडक्शन कितना मिल गया? दैट इज 90 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज का मुझे टैक्स डिडक्शन मिल गया। डिडक्शन यानी एक्सक्यूजेस, डिडक्शन यानी स्कोप टू रिड्यूस माय टैक्स बर्डन। तो मुझे कुछ ऐसा स्कोप मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया थ्रू विच and which is allowed by the income tax department, which is allowed by the GST rule, कि जो एथोराइज टैक्स चुकाने का, एथोराइज टैक्स सेव करने का जो अधिकार मिलता है उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्शन। गेटिंग दिस? सो विद रिस्पेक्ट टू दिस यू कैन मेक सर्टेन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा, कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, अगर हम लोग कुछ चैरिटी वगैरह कर रहे हैं तो जितना भी अमाउंट हमारा चैरिटी में जाएगा उतना हमको डिडक्शन मिलेगा। Getting this? डिडक्शन यानी क्या है? इट इज नॉट योर 100% एग्जम्पशन। टू सर्टेन अमाउंट यू विल गेट एग्जम्पशन, 50%, 30%। तो जितना भी मुझे परसेंट में एग्जम्पशन मिलेगा उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिडक्शन बोल सकते हैं। मीन्स व्हाट? दिस प्रोडक्ट्स विल बी नॉट टोटली टैक्स फ्री, certain amount you will have to pay there. Okay, as well as you can get the input tax credit to reduce this ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोगों को मिलता है दैट इज ऑल्सो टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन यानी उतने अमाउंट से मेरी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इट इज द स्कोप टू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन। तो जितना भी मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अर्लियर टैक्स पेमेंट किया रहेगा वो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो कि मेरा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। दैट इज द दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एग्जम्पशन एंड टैक्स डिडक्शन।
टैक्स एग्जम्पशन में पूरा एग्जम्पशन है, कुछ भी टैक्स भरने की जरूरी नहीं है। टैक्स डिडक्शन में क्या है, अर्लियर जितना भी टैक्स आपने भरा रहेगा उसको आपको एक्सक्यूज मिलेगी, उतना टैक्स फिर एक बार भरने की जरूरी नहीं। गेटिंग दिस? सो टू सर्टेन एक्सटेंट tax will be saved. That is something about tax deduction. Okay. Now TDS क्या होता है, देखिए, tax deducted at source. Just see the slide, then we will discuss. टीडीएस कट किया, टीडीएस कट किया, हम लोग बोलते हैं ना मेरा इतना टीडीएस कट हुआ। जिसका सैलरी ज्यादा है, जिसका टर्नओवर ज्यादा है, उसको टीडीएस कट करना पड़ता है। TDS यानी tax deducted at source. Whenever you are bringing the material, whenever you are providing the service, getting the services, at that time, at the time of payment of service, some activities, your service provider will deduct some tax at the time of your service. That is nothing but tax deducted at source. See here, it is the income tax reduced from the money paid at the time of making specified payment करते समय ही, such as rent, commission, professional fees, salaries, interest, by the person making such payment. अगर my payment is in, if my package is 25 lakhs, if my annual package is 25 lakhs, at that time who is giving me this package? My employer is giving me this package. Getting this? Now what will happen, whenever employer is crediting me my salary, at that time some part of my salary will be deducted in the form of tax. When I receive my salary, at the time of receiving my salary, my employer will cut some amount of tax through my salary. That is called as a tax deducted at source. जब मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा, ड्यूरिंग द बेनिफिट माय एम्प्लॉयर और माय सर्विस प्रोवाइडर will deduct certain amount of money in the form of tax. That is nothing but tax deductible at source. Usually the person receiving income is liable to pay the income tax. तो किसके अकाउंट से टीडीएस कट हो जाएगा? जिसको इनकम मिल रहा है, और जो देने वाला कंपनी रहेगा वो टैक्स पे डिडक्ट करेगा, और जो लेने वाला है उसके इनकम से कम करेगा। ऑन द बिहाफ ऑफ रिसीवर, the person, the company who is providing this kind of services, the company who is giving the salary, that company will deduct the TDS. Means it is a one form of advance tax. It is one form of advance tax which was collected earlier. Getting this? So this is something about TDS. So students, in this way we have finished third unit. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we will declare this third unit. If you have any doubt, let us discuss now. Otherwise, we will end the session, and we have finished third unit. Have any doubt? Just reply me. Yes, students? No, sir. So we have finished 3 units. So we have left with 2 units. Okay. So let's meet in the next week. I think I have provided you PPTs of all 3 units, na? Yes, sir. Okay. In case of any changes, if in case of any updation into the PPTs, once again I will send you PPT. अगर कुछ updation रहेगा तो मैं फिर एक बार PPTs आपको send करूंगा. Okay. So see you in the next week. Thank you so much. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.